वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिज़ाइन करेंगे फिज़िकल सिस्टम्स के लिए, और मैकेनिकल सिस्टम्स के हमने दो पार्ट्स को कंसीडर किया है। वन इज़ ट्रांसलेशनल सिस्टम्स, अनदर इज़ रोटेशनल सिस्टम्स। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने एक ट्रांसलेशनल सिस्टम्स को पहले अंडरस्टैंड करने का सोचा है, जिसमें हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और हमारे पास स्प्रिंग है और डैम्पर है एंड मास है, और वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, और इसको हम यहाँ पर वी कैन राइट x। सो x डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो अपवर्ड हो रही है, और कांस्टेंट जो हमने लिया है डैम्पर के लिए f लिया है और स्प्रिंग के लिए k कांस्टेंट लिया है। अब इसको एक्सटेंड करते हुए इस सिस्टम को हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, कि फोर्स हम लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो एक्सर्ट होगी फोर्स स्प्रिंग की वो होगी नीचे की तरफ टू मेंटेन द बैलेंस, एंड जो डैम्पर की फोर्स है वो भी नीचे की तरफ लगने वाली है। नाउ दिस इज अ मास अप्लाइंग फोर्स F in the upward direction, and this is going to apply a force in the downward direction K into X, and that is F into X dot, and that mass is going to cover a distance X. So ये इसका एनालिटिकल डायग्राम होता है। ये वेलोसिटी हो गई कि जिसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं टू अंडरस्टैंड द फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रही हैं। सो दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है कि algebraic sum of forces acting on a rigid body like this mass in a given direction is equal to the product of mass and its acceleration in the same direction. So in this free body diagram we can calculate the force applied, that is equal to mass into respective जो acceleration है, that is in the form of displacement, then for damper that is F d by dt of x plus k into x. So this is the equation for this kind of structure. So अगर ये free body diagram से हमने इसको drive कर लिया है तो we can also have a network diagram also. नेटवर्क डायग्राम में क्या करेंगे कि यहाँ हमने एक फोर्स अप्लाई की, that is F in this direction, and we are going to apply this force on a mass, that mass is m, and on a spring and on a damper, right? So this is network diagram. We can find the analogy from that. So यहाँ पर we can show the displacement and the velocity, and this is nothing but having the constant k, and that is having f. So this kind of diagram is going to helps us to find out the analogy in the electrical and mechanical networks. So the free body diagram of a translational system indicates the elements m and all the forces acting on them, and an external force F is acting on it to move it by a distance x, and this motion is opposed by the force of mass and the force of spring and the damper. So we can also say in that way
और इसके हिसाब से हम फ्री बॉडी डायग्राम को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और आफ्टर दैट वी कैन हैव द नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो, जिससे हम आगे एनालॉजी भी क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल नेटवर्क्स। इन द सेम वे अगर हम रोटेशनल सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सो फॉर दैट we are having a representation, so suppose this is our rotational system. So यहाँ पर अगर हम देखेंगे, so this is a moving part, rotational moving part, and that is the angular speed, that is angular torque, and that is a damper over here, right? So if it is so and it is moving through a angle theta, so हम जब speed calculate करेंगे, so that is omega is equal to d theta by dt. इसका थोड़ा सिंपलर डायग्राम अगर बनाएं तो हम यहाँ पर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज्यूम करेंगे और यहाँ पर एक हमारे पास शाफ्ट होंगी बोथ साइड, है ना, इट इज़ गोइंग टू मूव। सो यहाँ पे अगर हम टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, दैट टॉर्क इज़ टी, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क इट इज़ गोइंग टू कवर ए डिस्टेंस थीटा, एंड देयर इज़ अपोजिट विच इज़ गोइंग टू अपोज दैट फोर्स और टॉर्क, दैट इज़ एफ थीटा डॉट, and for spring there is again k theta is another force which is going to oppose it. So if it is so, then we can have another representation, that is sort of free body diagram. So that is P is equal to, first force क्या थी, that is J d square theta by dt square, d square dt, d by dt square and theta, plus another force is by F, that is F d theta by dt plus k theta. So that's how we can represent it, right? So अगर हम इसका network diagram बनाते हैं, so it is going to be कि we are exerting a force T and it is going to apply on the inertia, that is nothing but J, or uniquely it is going to cover a distance theta with the velocity omega, both are the function of time, and here we can have a damper, right, F, and we are having theta, sorry, K, which is going to generate a force which is opposite to the torque, right? So this is network representation, और हम इसको mechanical network भी बोल सकते हैं, mechanical network representation. So we can also say this is mechanical representation. अब इसको थोड़ा सा understand कर लेते हैं कि से सपोज यहाँ पर अगर हम ट्रांसलेशनल सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम यहाँ कुछ फोर्स अप्लाई की है तो ये मास में और दिस स्प्रिंग में और डैम्पर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक फोर्स लगाई है तो दैट फोर्स इज गोइंग टू सप्लाई टू द मास एंड स्प्रिंग एंड डैम्पर ऑल्सो. सो इट इज़ लाइक KVL we can KCL we can say that KCL is going to supply the current in those branches. So we will create the analogy, and same for the torque also, as the torque is going to exert a force and that going to opposed by the inertia, damper and the spring. So these kind of diagram is going to help us to understand the mechanical networks. So hope you like the video. Please subscribe the channel, and we'll meet in the next video for further clarifications and understanding the concept.